हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +2 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज गोइंग ऑन। इसमें लास्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज लेक्चर ऑन दिस चैप्टर, दिस लेक्चर 26 लेक्चर 25 लेक्चर्स हैज़ बीन डन इन ऑन दिस चैप्टर 5। तो लास्ट दिस ओनली, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 9 in miscellaneous. Up to 8 has been done. So now question 9 to onward 14 we have to do. Now question 9 is find the derivative with respect to x. ठीक है, then y is equal to sin x minus cos x whole power sin x minus cos x. तो लाइक दिस क्वेश्चन पावर टू पावर है, बट पावर फॉर्मूला x पावर n है, n मस्ट बी द नेचुरल नंबर n. इंस्टेड x may be any function in the x variable in any formula where x at that place may be any function in x variable, but where is n in the formula x power n? Okay, then n must be only real number, then only we can use this formula. Here chain rule is not applicable if n is not natural number or any real number. So okay, so here chain rule not applicable. So that's why here which method we have to apply? How can do this derivative? So derivative of this power formula not applicable. So log form. Which log form? Log method. Log method taking log both side. Solution. टेकिंग लॉग बोथ साइड. ठीक है बेटा, टेकिंग लॉग. तो लॉग ऑफ y इज इक्वल पावर फॉर्मूला m पावर n का log m पावर n, n इज हेयर sin x माइनस cos x, n into log m, n log m, m is again sin x minus cos x, log of sin x minus cos x. So now here product formula differentiate now. Now differentiate with respect to x. Okay, now what will come? log y का डेरिवेटिव 1 upon y into chain rule डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx with respect to x. Then here u into v, you know product rule, derivative of u derivative sin x का derivative cos x, and cos x का derivative minus plus sin x, this derivative of u done into v is log of sin x minus cos x into v plus derivative of v यानी log of something upon 1 upon that something, that is sin x minus cos x. Instead x is this, so 1 upon x into derivative of this. What is instead x? So that is sin x minus cos x. So derivative of this, derivative of sin x cos x, and
derivative of cos x minus sin x, then minus minus plus sin x. Okay, after that this is the derivative of v complete into u is sin x minus cos x into sin x minus cos x. Now this completed. Okay, clear? U into v done. Then dy by dx simplify. Okay beta, then implies dy by dx will be equal y means original means sin x minus cos x whole power sin x minus cos x. Okay, this is y into this as it is. ये सिंप्लीफाई करें, यहाँ देखो क्या है ऊपर मल्टीप्लाई में ऊपर sin x माइनस कोस एक्स, नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है बेटा, sin x माइनस कोस एक्स, sin x माइनस कोस एक्स. ओके बेटा, क्लियर? नाउ सिंप्लीफाई. हेयर cos x प्लस sin x, हेयर cos x प्लस sin x, देन cos x प्लस sin x कॉमन ले सकते हैं. ओके, दीज टू टर्म्स आर देयर, cos x प्लस sin x कॉमन एंड दिस पूरे से मल्टीप्लाई था ही बाहर. देन व्हाट विल लेफ्ट हेयर, sin x प्लस cos x कॉमन, देन log sin x माइनस cos x. log of sin x minus cos x, this term here left, plus what left here, cos x plus sin x, this cancel, this into this only, then cos x plus sin x. Okay, now you can see here, if anything simplify तो can do this into this into this. तो ये हो सकता है a minus b, a plus b, a square minus b square. We can write if want to write, तो only we can write a square minus b square. तो sin square x minus cos square x. This into as it is this. Okay, answer done. Next question. Okay, what is next question? Question number 10. Okay, now question number 10 is x power x plus x power a plus a power x plus a power a for some fixed a greater than 0 and x greater than 0. A is any constant greater than 0 and x is variable also greater than 0. Okay, now this question 10, it is simple. X power x plus a power x power a x power any number a plus a power x
plus a power a. This okay बेटा, you see here यह फार्मूला नहीं लग सकता x पावर x पर, x पावर a फार्मूला वी कैन यूज, a पावर x फार्मूला वी कैन यूज एंड दिस कांस्टेंट, तो ये तो हम कर सकते हैं, इन पर फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है बेटा। ओके, इस पूरे को एक ही मान लो, अंडरस्टैंड, जगह फॉर्मूले से हो जाएगा ये, और इसको u मान लो, तो इसको तो मान लो u log फॉर्म, इसको v, टू फंक्शन, तो वी कैन राइट दिस क्वेश्चन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू u मान लिया हमने इसको, तो du बाई, लेट अस सपोज दिस इज u, तो du बाई dx एंड प्लस दिस फुल इज v, देन dv बाई dx. This equation number 1. Okay beta, now separately, now take what u, what is u? Okay beta, u is, you can write again, u is x power x, then taking log both side, then we can write log of u is equal log यानी x log x, n log m, m भी x, this beta, then differentiate with respect to x, differentiate with respect to x. Okay beta, now log u derivative with respect to x, 1 upon u into du upon dx, okay, is equal x into log x, product rule, derivative of u, derivative of x is 1 into direct I am writing, okay beta, and plus derivative of log x, 1 upon x with respect to x, and into u is x, then it will be x cancel, then 1 plus log x, 1 plus log x, ये du by dx, from here what will be into u means x power x, u is original, so this is equation number 2. Now find what v equal to dv by dx, we have to find from here, so second we taken v is equal to x power a plus a power x plus a power a. Okay, now differentiate with respect to x direct, dv by dx will be equal x power n formula we can use, x power a is any real number greater than 0, so x power n x power n minus 1, a minus 1, okay beta, plus a power x formula, direct we know, a power x into log a, so a power x derivative with respect to x, a power x into log a, standard formula which we know, log of a, and plus
constant term a power a, it is constant, a is any real number, so this is derivative of constant is 0. Done. Then this is your equation number 3. Use equation 2 and 3 in equation 1. Okay, using, okay beta, using equation 2, 3 in 1, what will come? Imply that dy by dx is equal du by dx. So du by dx from equation number 2, what? X power x into 1 plus log x. This is du by dx value from equation 2. Put here, and then plus dv by dx from equation 3. A into x power a minus 1 plus a power x log a. So log a into a power x into a power x. Done. Okay beta. So this is your only you can take in this and this common if you want, x power a minus 1 here, x power a, so no need, this only is derivative. Answer. Done. So like this we should do. Okay, next question number 11. Okay beta. Now what is question 11? In NCERT book. Okay, in NCERT book, what is question 11? Question 11 is question number 11 in NCERT book. X power x square minus 3. Question 11. X power x square minus 3 plus x minus 3 plus x minus 3 whole power x square. Okay, now here again same thing, because power to power x power n natural number nahi hai, so we can't use here power formula exponential. That's why take u and v, ठीक है, and differentiate with respect to x both sides. So dy by dx will be equal to same du by dx. Okay, let this u and this let v. So then with respect to x, this dv by dx separately, because we can't take the log directly. If plus minus any two terms are there in any one side, only product is there, then we can take, because log we can take of the multiplication of the m into n into p, so we can take log, but m plus n plus p log we can't take. Log formula log mn is equal to log m plus log n, log mn. Log m plus n can't expand. Okay, be careful, this mistake has been done generally. So be careful, if terms are there in any one side, plus or minus are there, then we can't use direct log.
तो वी हैव टेक सेपरेटली u, v, w and then log separately and find separately and put in the equation. So बी केयरफुल। तो u क्या है आपके पास, सेपरेटली हमने लिया है x पावर x स्क्वायर माइनस 3, दिस इज u। टेकिंग log बोथ साइड, तो log u वी कैन राइट log फॉर log ऑफ u इज इक्वल टू m पावर n log n log m, तो n इज x स्क्वायर माइनस 3 पावर n into log of m, log of m, m is here x, okay, x, this clear, log हो गया। now differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, okay बेटा, what it will be du by dx, okay बेटा, du log u, sorry, log u, derivative of log u, derivative of log u 1 upon u, chain rule, into derivative of u with respect to x, du by dx, okay, log u का डेरिवेटिव हो गया, इक्वल ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का इंटू लॉग एक्स, चेन रूल या प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, डायरेक्ट u इंटू वी एंड u डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, देन 2x माइनस 0 डेरिवेटिव हो गया इंटू लॉग एक्स, ओके बेटा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v यानी log x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x इंटू u इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, दिस डन, ठीक है बेटा। नाउ दिस u विल गो दैट साइड, सो दिस implies du by dx, it will be equal, u multiply u is original is x power x square minus 3, x power x square minus 3, u into this is we can take x LCM, तो we can write 2x square into log x, x LCM, ठीक है बेटा, प्लस दिस x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है बेटा, अपॉन x, तो अपॉन x यहाँ ले सकते हैं आउटसाइड, एंड ये x पावर 1 है तो ऊपर चले जाएगी। इसको सॉल्व करके और सिंप्लीफाई करके व्हाट वी कैन राइट, x पावर 1 एंड x पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो 1 ऊपर माइनस 1 माइनस 4 वी कैन राइट, तो x पावर x स्क्वायर माइनस 4 वी कैन राइट, ओके, एंड देन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड दैट 2x स्क्वायर, इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं, दो टर्म में है यहाँ कॉमन, बट कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो, फिर माइनस 3 अलग करना पड़ेगा। तो एज इट इज़ 2x स्क्वायर, इफ़ वी हैव टू प्रूव देन वी कैन डू 2x स्क्वायर log ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस 3, आंसर, ओके बेटा, लाइक दिस, इफ वी हैव टू प्रूव एनीथिंग तो वी कैन सिंप्लीफाई, अदरवाइज नो नीड टू सिंप्लीफाई मोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन 12 बाय ओन और नॉट, यू सी व्हाट इज क्वेश्चन 12, easy, I am telling, similarly you can do find dy by dx if y is equal to this,
Okay, you can do this. It is parametric form, parametric t, parameter t. So separately you can take dy by dt and dx by dt and then divide both, then dy by dx will come. Clear? Now next 13, find dy by dx if y equal to this. Okay, direct you can do this. And then 14, okay, if this, I am telling 14th. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. See this question 14. What is 14? If x into square root 1 plus y plus y into square root 1 plus x equal to 0. If this 0, ठीक है, प्रूव दैट, ये प्रूव वाला क्वेश्चन है. प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, प्रूव दैट, what we have to prove, dy by dx is equal to this is equal to minus 1 upon 1 plus x whole square, minus 1 upon 1 plus x whole square. This we have to prove beta. तो proof, हाँ जी, प्रूफ ध्यान दें कैसे करना है. दिस इज गिवन, तो हियर इक्वल टू 0 गिवन, सो टेक वन टर्न दैट साइड. तो वी कैन राइट दिस x इंटू 1 प्लस y इक्वल टू minus y into root 1 plus x. Okay, you can take y variable one side, x variable one side. If you want to take, you can take. भाई मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा. ओके बेटा, और यू कैन डू डायरेक्टली हियर होल स्क्वायर. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड in this question. This is the technique in this question. If here derivative लोगे तो ये मुश्किल हो जाएगा. Okay, be careful about this. This question is important question. Okay, squaring both side. So then what will come? X square into रूट हट जाएगा, y1 प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया. देन होल स्क्वायर नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स. क्लियर? देन सिंप्लीफाई दिस, व्हाट विल कम? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई. Okay, multiply, open the bracket, and this take this side, minus y square and minus y square x is equal to 0. Clear? Now x square here and here, y square, तो x square minus y square, simplify only, x square minus y square, these two term, x square minus y square and these two term plus here common in these two term xy common,
ओके बेटा, एक्स वाई कॉमन दीज टू टर्म, फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट टर्म, ठीक, 4 टर्म है, 4 टर्म, तो एक्स वाई कॉमन, देन एक्स एंड माइनस वाई, this is technique here to simplify this. Then you will take in the simplest form functions derivative. Okay, now here 2 factor a square minus b square, a plus b यानी x square minus y square, x plus y into x minus y, 2 factors, ठीक है बेटा, and plus here already as it is xy into x minus y. Okay, so these two terms now, then x minus y is the common factor in these two terms, so x minus y is common factor, then what left here, x plus y and plus xy is equal to 0. Then this factor will go in divide, 0 divided by any number is 0, so we can write this x plus, here y कॉमन ले लें इन दोनों में से, है ना, या ऐसा करें y इक्वल बना लेंगे, ठीक है, तो y कॉमन ले लें यहाँ से, y कॉमन इन दीज टू टर्म, तो x प्लस 1 सी है एंड प्लस x is equal to 0. This will go in divide 0. Then here y equal we can make, then y इक्वल, ये माइनस x उधर जाएगा, दिस टर्म माइनस एंड दिस प्रोडक्ट नंबर विल कम इन डिवाइड 1 प्लस x, 1 प्लस x, डन. ओके बेटा, देन डिफरेंशिएट दिस नाउ, this is simplest form. Now differentiate with respect to x. So what will come? Differentiate this, dy by dx, dy by dx is equal to u upon v, क्वोशेंट रूल, डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस x माइनस 1, डेरिवेटिव माइनस x माइनस 1 इंटू v, v इज 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x, ठीक है बेटा, माइनस फॉर्मूला एंड डेरिवेटिव v, डेरिवेटिव v इंटू u, तो u इज माइनस एक्स, तो माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ v 1, 0 प्लस 1 देन 1 डिवाइड बाय v स्क्वायर, v स्क्वायर मीन्स 1 प्लस x होल स्क्वायर. This quotient rule formula applied here, then what will come? This I am writing here, then it will be dy by dx equal, see here, minus 1 minus x, minus 1 minus x plus x upon 1 plus x whole square. Minus x plus x cancel, then hence proved it. Okay, hence
dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x whole square. Done. Hence proved. Done. So like this we can do. Easy to solve, to prove. Other question 12, 13 you can do similar questions. Okay beta. Now be careful about this question. This is the most important question. Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them. They must watch, like, share and subscribe the channel and send the feedback in comment box. Thank you.